हेलो हेलो व्हाट्सअप। क्या हाल चाल दोस्तों। सो गोल्ड moved as expected, but euro में I am seeing opportunity. For now what I am seeing here is there is a fair chance that we might see prices coming within this supply area now, because like we have swept liquidity now. I think we are looking forward to move somewhat higher and sweep liquidity here, come something within the premium area. And honestly the premium area is this: if we weekly would be too high, let's like if we just go for 2 days time frame, so in 2 days you can see this range is unmitigated and inefficient. So there's a fair chance that we can see prices coming to the premium area. So that's the reason we will be continuing to look for longs right now in euro USD. And also we are reacting from a nice demand area, which is this. So it does make sense for us to look for a continuation longs. For now what I'm seeing is prices to take out, like if we just see once, honestly if prices want right now, like I'm a bit skeptical about where we are and like what next, but at least I'm expecting price to come within this range low. And this range low is perfectly aligning with some supply area that we can see here. Okay, which is maybe this supply firstly. So the supply looks good. The next supply would be something within this that is still unmitigated and inefficient. So these are the three areas are there that we can look forward to enter shorts from. But at the moment we'll be continuing to look for longs. In the morning I had a intention that if prices happens to reach within this demand zone और दिस हायर टाइम फ्रेम एरिया फॉर लॉन्ग्स, तो यहाँ से हम लॉन्ग्स के बारे में सोच सकते हैं. प्रिसाइजली मुझे ये एरिया अच्छा लगा था बिकॉज यहाँ से ही प्राइजेस ने पिछला सप्लाई ब्रेक किया था और यहाँ से ही लिक्विडिटी हंट करके प्राइस ऑर्डर फ्लो बिल्ड कर रही थी और यहाँ से हमें बाइंग देखने मिली. सो आई वॉज एक्साइटेड टू एंटर, excited, interested, you can name whatever you want, but yeah I was inclined towards this demand area, जो कि प्राइजेस ने टैप नहीं किया. अभी हम देखेंगे अगर हमारा ओपनिंग अभी नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में होगा तो मेरे हिसाब से अगर ये स्वीप करे और ऊपर चले जाए तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग. तो स्वीप मैं किसका वेट कर रहा हूँ, मैं इसे लिक्विडिटी की तरह देख रहा हूँ बेसिकली. ये सारे जो लोज बनाए हुए हैं, it's not really coming from anything significant. And why I am saying that, because if you move to higher time frame, maybe 15 minutes, maybe 1 hour, we have not really tested this demand area. So I would really like to see prices coming within this area, dipping down lower and then pushing up higher again. हम अगर गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो गोल्ड इज एक्चुअली जस्ट पुशिंग हायर. Nothing new, nothing else, right? It's just pushing up higher. So let's see how it goes. Just give me a minute. Yeah. So let's see how this goes. Gold में continuous buying आ रही है. I was inclined towards entering in long. यहाँ पे 10 minutes में मैंने कहीं तो एंट्री ली थी. 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes. He though I have executed position. Maybe it was this demand area or something like that. At the night, this went really well as we decided, as we anticipated. Very beautiful price action, just continuing to fly. I don't know for how long it's gonna fly more because, oh, what is this? I mean, like, what the fuck is this? Crazy, right?
Gold prices have skyrocketed like anything. So let's see. I don't really have immediate intentions at the moment. I'll be waiting for something clearer to happen before me executing any positions. गोल्ड तो क्लियर है ही लेकिन थोड़ा डिस्काउंट में आया बिकॉज अभी इट्स एट न्यू ऑल टाइम हाई. So we'll just continuing to look for longs if it happens to retrace to the discounted area. Yes, we will. गोल्ड में ऐसा क्यों कम and then dump? नहीं डंप तो नहीं होगा गोल्ड. हाँ रिट्रेसमेंट में तो जाएगा नहीं यार मतलब साइक्लिक है भाई सब कुछ. यहाँ पे भी जब पंप हुआ था तो इवेंचुअली वो रिट्रेसमेंट में गया ही राइट. और रिट्रेसमेंट में ये कितने कितने टाइम के लिए था इफ़ यू सी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4.5 5 5.5 years नहीं 4.5 5 years के आसपास ये पंप में रिट्रेसमेंट में था. And then again it realigned and it continued to push अभी. तो अगर ये वाले बॉटम से हम कैलकुलेट करें कि प्राइसेस ने कितना दिन लिया था न्यू हाई बनाना है. इट्स क्लोज टू 8,850 डेज. यहाँ से इट्स ऑलमोस्ट 3. ब्रो 8,000 विल बी वे टू फार. जब नीचे होता भाई फिर तो मुश्किल है भाई. होना बिना लेना फिर तो मुश्किल है अगर वेट कर. नहीं वैसे तो यार अभी तो सेंस भी नहीं बनता यार लेने का. जस्ट पंपिंग पंपिंग until unless you are trading. That's a different story. Yesterday I was quite sure कि ये और ये जाएगा बट स्टॉप लॉस यार स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था मतलब कैन यू इमेजिन 100 150 पिप का स्टॉप लॉस लगाना 108 पिप का स्टॉप लॉस लगाना. व्हाट्स दिस. सो इसलिए मैंने ली नहीं. यूरो भाग रहा है भाई ऊपर. यूरो just continue to push up higher. We will be seeing market opening right now. I don't trade GBP USD bro. So पता नहीं भाई GBP USD का क्या है. लग तो ये बुलिश रहा है. Maybe it will just take out this but I don't really care much. यूरो अपना सही है. यूरो में देखूंगा मैं क्या होगा इसके बाद. I am sort of still inclined towards buying only यहाँ तक और मे बी यहाँ तक और फिर उसके बाद में मैं सेलिंग के लिए देखूंगा. गेटिंग अ नाइस बाइंग दो. Let's see if we happen to get any nice entry around this. Right now it's in a no trading zone and a no man's land. Let's wait for it to do something nice that we can execute our positions there. कल साला टेस्ला बस स्वीप करके ऊपर चला गया. फर्स्ट स्टॉप लॉस को पप्पी दिया और ऊपर चल दिया. They are currently reacting of this supply area. Let's see how this moves and holds. And trading is mostly this very brutally. By the way, just go to my this channel, click on shorts और जो पहली शॉर्ट मैंने अपलोड की है उसे देख के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना. मे बी ये लाइफ खत्म होने के बाद करना बट हाँ करना. Looks like this is also getting ready for a up move again.
So if it continue to push up high, I have no problems in just executing in that direction. Let's see. There's a double bottom liquidity in EU in 1 hour. In higher time frame, maybe the markets will target that to the supply. Yeah, and then mostly will enter longs. Are you seeing, oh, this liquidity you're talking about? See, it's quite possible that from here we can start seeing selling. Very much possible. Because overall the higher time frame intention is bearish, but what I'm inclined towards is अभी अगर अपन डेली का इमीडिएट स्ट्रक्चर देखें ना, तो डेली का इमीडिएट स्ट्रक्चर ये हाई से लेके ये लो की तरफ आ रहा है. See, whatever low that you have discussed or talked about, that is definitely supposed to be taken out. But I would really like if price come around equilibrium area or at least test this range high, range low, and come within maybe 50% or 618 level. And from this area, it would actually be a great move for selling. So that is what I'm waiting for. I will not be looking for like quite aggressive shots from here. It can work, but I want more conviction. Instead, I would not be the first one to short, but I would be like once I see failure of this and once I see price start failing, I'll then look for shots. Not at this level. This level, I'm skeptical if it's gonna hold, if it's not gonna hold. So let's see. But yeah, the intentions, it's right. This low is definitely supposed to be taken out, but currently the way we are reacting, look at this, it's quite aggressive. Of course, we have not really closed weekly wise, but I am expecting some retracements above, to the above areas. यहाँ से भले ही एक सेलिंग आ जाए, बट अभी फिलहाल जो बुलिश ऑर्डर फ्लो होल्ड कर रहा है, मैं उसको इंक्लाइन करके ही बेस करना चाहूँगा ट्रेड. और ये रही बात ये लिक्विडिटी की, तो ये जाएगी, बट कब जाएगी ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है. मेरा इंटेंशन ये है कि अगर प्राइजेस यहाँ वाले सप्लाई में आए और यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिले तो मैं शॉर्ट के लिए बेट करूँगा. बट यहाँ से इट्स सी स्ट्रक्चरली 4H वाइज इट डज मेक सेंस. ठीक है, आप जो कह रहे हो ना 4H वाइज वी हैव ब्रोक द स्ट्रक्चर, वी गॉट अ रिट्रेसमेंट, देन वी गॉट अगेन अ ड्रॉप. This supply is good that way. We have inducement here, we have failed to take out this low, then we have swept the liquidity, we are within the supply area, everything is good that way. The only problem is daily mein it's not really the premium. And look at this daily candle close, yesterday's close, today's close, it's quite aggressive. So instead I would like to wait for more continuation longs instead of me trying to look for shots. That is what I would wait till the prices don't come to 50% or 61.8 area. I'll be looking for that sort of thing. But इसका मतलब ये नहीं आप शॉर्ट नहीं ले सकते. डेफिनेटली यहाँ पे लिक्विडिटी है, सो आप इसको टारगेट करते हुए शॉर्ट्स ले सकते हो. इनफैक्ट देयर इज अ क्वाइट लाइक देयर इज अ फेयर चांस कि प्राइस इसे भी स्वीप करके और नीचे जाए. तो अभी थोड़ा सा है ना इनडिसिसिव वाला, मतलब आई डोंट रियली हैव वेरी समथिंग वेरी क्लियर. अगर मुझे शॉर्ट लेना है तो आई वांट सम मोर ऑर्डर फ्लो टू बिल्ड. आई वांट प्राइस टू जस्ट गिव मी सम कन्विक्शन. अभी द प्राइजेस द डेवलपमेंट इज नॉट इनफ फॉर मी टू कंक्लूड एनीथिंग, लाइक फॉर मी at least, or to take any specific trade in specific directions. I'm not really sure of it at the moment, so I'll see how it goes. Yeah, we are getting a good reaction of this area. Let's see the, like, if we get more price developments or 1 minute order flow bearish kar leta hai, we do have very clean liquidity available to target.
So maybe we can just take a very smaller time frame trade on this one, because it's quite possible it can work that way. German index. हाँ भाई, चलता है। हर बार थोड़ी ना काम करेगा ट्रेड, कभी कभी लॉसेस लेने चाहिए होता है भाई। जर्मन इंडेक्स में है ना, आई एम क्वाइट स्केप्टिकल फॉर लॉन्ग्स, बिकॉज in German index, I'm seeing some sort of weakness. Of course, in 1 minute it's looking extremely weak, but if you just go to weekly time frame, what you can see here is we have taken out the structure and we have just tested the range high. And right now the prices are getting slow. So in these sort of cases, for the most part, what I've seen is maybe it will just react, maybe hold around for some more time and then sweep. And then from here the order flow builds and it will just go aggressively. That is a fair chance. ऐसा हो सकता है। तो जर्मन इंडेक्स यार क्या पंप किया है, fuck, it's amazing. This asset is also nice, but yeah, now it's quite possible that we can actually expect some retracement from the current area that we are reacting. Right now I don't see much price developments. I don't really have a very solid trade plan, so I'll be waiting patiently for the right setup. And yeah, let's chill, let's not take any foolish trades. गोल्ड में लॉन्ग्स बन सकता है, तो वो बस ध्यान रखेंगे कि थोड़ा डिस्काउंट में आए तो लॉन्ग्स पेल देंगे, लेकिन वैसे फोमो वाली एंट्री नहीं लेंगे भाई। यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, जेपीवाई में सेलिंग देखने मिल सकती है। Because your dollar is dumping, right? So we are expecting like maybe price will just dip down lower within these demand areas, or at least till this range high, and from there we will continue to look for longs. This is what we are expecting, right? So as per that, यूरो में अपन को बाइंग देखने मिलेगी, और इसीलिए मैं बोल रहा था कि अपन बाई ही देखेंगे मोस्टली यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये बाय हो रहा है तो यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, यूएसडी जेपीवाई, ये सारे पेयर्स में अपन को भी बाइंग देखने मिल सकती है। ओ सॉरी, सेलिंग देखने मिल सकती है, शिट। हाँ, ये वाले पेयर्स में अपन को सेलिंग देखने मिल सकती है। और यूएसडी जेपीवाई लुक्स क्लीनर दो, लाइक अगर हम बाकी सारे कंपैरिजन में ये देखें तो दिस इज लाइक क्वाइट क्लीन। वी कैन से दैट ये रेंज हाई तक आए, तो ये रेंज हाई के अलाइनमेंट में समथिंग विद इन दिस डिमांड एरिया। थोड़ा प्रीमियम में आता है तो वापस शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखें विच इज़ योर डेली, सो डेली में this looks like a sell to buy price action. If I just open daily, you can see this looks like a sell to buy price action. तो यहाँ पर ड्रॉप देके बाउंस करेगा। तो अगर हमें प्रीमियम एरिया में यूएसडी जेपीवाई मिलता है तो अपन शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर 1H में अगर अपन ओपन करें तो दिस एरिया लुक्स गुड, राइट? लाइक
this range. This entire range looks good. So this buy to sell price action looks like a nice supply area. So if price happens to reach within that, definitely we can plan something for shorting. And if not something very crazy like that, at least what we can expect is if it comes within this area, यहाँ पे जैसे ही shift मिले, यहाँ से we can plan shots again. Okay, so USD JPY में अपन shorting का देखेंगे. उसके बाद में yeah, looks good. USD CHF भी shorting का ही बन रहा है. At least this low is supposed to be taken out, and overall if we see daily and weekly time frame, तो उसमें तो ये क्लियर है कि भाई अभी ये लो जाएगा, बट इसमें मेरे को वीकनेस लग रही है. मतलब और कितना गिरेगा, थोड़ा सा स्वीप करके थोड़ा और लिक्विडिटी स्वीप अगर आता है तो इट कैन जस्ट गो डाउन लोअर क्वाइट एग्रेसिवली. बट या यहाँ पे इंटेंशंस और बायस ये है कि ये मोस्टली नीचे गिर सकता है. आई विश ये नीचे आ जाता थोड़ा यार, कि यहाँ पे आके फिर बाइंग देता. मतलब डॉलर में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद वो फॉल करता. दैट वुड हैव बीन लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी. अगर यहाँ पे रिट्रेस करके ड्रॉप दे दे. We know that these areas are supposed to be taken out in dollar index, and when we go to daily time frame, there is this range, the same range that we have drawn on our euro USD. So वो euro USD के हिसाब से this is that demand area, and if we just narrow it down, maybe 4H में we got something within this, maybe higher time frame में we got something within this. So we need to actually like filter out कि कौन से एरिया से हमें एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है. Based on that we will plan, but I would really see some retracement before more fall and would be betting on that. तो उस चक्कर में क्या होगा, अगर ये ऊपर जाके नीचे गिरता है तो ये थोड़ा सा नीचे जाके अगर ऊपर आ जाए तो दैट वुड बी फन. वी विल एंटर लॉन्ग्स. लेट्स सी हाउ इट गोस, बिकॉज जैसे हम चाहते हैं वैसे थोड़ी ना प्राइस मूव होगी. इट हैज़ इट्स ओन माइंड, but would love to see price something within this before us entering in longs. And that's the reason you don't really just have to see the supply area and short randomly, because if you do that you would have been like not fucked, but yeah, like unnecessary stop loss. तो अभी अपने हाथ में वही है कि अभी जब कुछ क्लियर नहीं है तो वेट करना ही अपने हाथ में, एंड दैट इज द मोस्ट वाइजेस्ट डिसीजन दैट यू कैन just take for yourself. I don't know why that alert came 404. Yeah, I'm pleased alert. Gold is forming new highs. Nothing in that as well.
Priyanshu, gold is doing nothing, bro. There's no trade in this because the problem is it's at all-time high level. If I want to enter, I would have loved to see a proper retracement. I have marked the alert level, something within this area. Uh, and honestly and precisely, I would like to see it maybe reaching something within this demand before me executing longs, or at least tries to come within this range high. Abhi, it's more of just chasing, like you chasing the prices right now. Agar if you happen to plan any entry right here, because it's not the best area to execute longs from, because you don't really have a clean room. Like you don't know how long it's gonna push up higher, how long it's gonna hold. So it's always better to stay back and wait for more price developments, because if you miss this particular entry, no worries, you will be getting few more entries in near future. So it's not at the end of the world that, because imagine like how much moves you have capitalized in this, right? So every time prices decide to give some discounted pricing, just like yesterday, it was a great move. So abhi we wait karenge, because in every swing you can see that like prices are continuously forming higher highs and higher lows. It's always trying to liquidate somewhere. जैसे कि यहाँ पे वो कंसोलिडेट किया, ऊपर चला गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ऊपर चला गया, फिर लिक्विडिटी स्वीप किया, कंसोलिडेट किया, ऊपर ये चला गया, स्वीप किया. अब यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और ऊपर जाएगा, स्वीप करेगा, तब लॉन्ग लेंगे. ठीक है, गोल्ड का वही नेचर है भाई, वो हमेशा ऐसे ही करेगा. कंसोलिडेट करेगा, लिक्विडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, लिक्विडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, लिक्विडेट ऊपर, कंसोलिडेट लिक्विडेट ऊपर, कंसोलिडेट लिक्विडेट ऊपर, कंसोलिडेट यहाँ पे अभी करेगा, फिर लिक्विडेट करेगा, फिर वापस ऊपर. जब तक वो होल्ड कर रहा है तब तक होल्ड करेंगे. और जब तुम्हें 15 मिनट्स में शिफ्ट देखने मिले कि भाई प्राइस ब्रेक हो रही है, अभी इसने हाई बनाया, फिर ये ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स इट्स कमिंग टू योर 4H डिस्काउंटेड एरिया. सो 4H में अभी नया स्विंग लेग कौन सा बना फ्रॉम दिस लो. द हाई इज नॉट रियली एट कन्फर्म, बट जहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा, लेट्स अज्यूम यहाँ से आया, so that will be your swing high. So this becomes your swing low, this becomes your swing high, and prices will come to the discounted area. And once price comes to the discounted area, you'll wait for a 15-minute structural shift, and once 15 minutes start showing convictions, that's when you will again continue to enter longs. Okay, so yeah, that way. The most important part in trading is the most important and the most difficult part, patience. जो वेट होता है ना, जो ट्रेड नहीं मिल रहा, क्या करे, उसमें ही खराब हो जाता है सब. So try to learn, like just try to discipline yourself, try to make yourself understand that patience is the most important thing. Once you start being patient, and once you stop fucking around and fooling around your own self, every day is a trading day. No, it's not. For you to make big money, you need to understand that you have to wait, not really to execute your position, but to, like, for you to actually wait for your TPs as well. If you just end up forcing your own self to exit the positions, that way you are just affecting your profit potential and nothing else. If you, of course, if you do have a really solid conviction that it's gonna work. I'm thinking of entering longs in US 100 after it gives some dip. So most probably in New York we can see some buying coming in. I am bullish only, but I wanted to retrace first for me executing longs. I would like to see prices coming to some discounted area and then longs, because right now we are at all-time high. I don't know for how long it's gonna be at all-time high level. I don't know when it's gonna retrace. So instead, I would like to have that idea with me that okay, I have this much amount of clear room
to enter longs or enter shorts, and that's when I will plan my entry. So maybe if it happens to reach within this or maybe dip down lower within this, that's when I'll plan to enter longs. So meanwhile, just be patient and don't really do much. That is the best thing that you can do. God. Just join live. Cool. Yeah, just waiting for something, bro, because right now things are not very clear. So instead, we would like to wait. We start seeing some retracement in gold. Not really sure if I can call it a retracement because यहाँ से भी वो pump करके ये 30 35 40 पिप का टारगेट दे, बट उसके लिए 40 पिप का स्टॉप लॉस लगाना सेंस बनता है क्या? भाई कुछ भी हो सकता है, जब जब तक वो तुम्हें लॉजिकली सेटअप में नहीं बैठ रहा तो इंस्टेड लाइक यू जस्ट वेट पेशेंटली. देखो ये हो सकता है कि मैं शायद यूरो में एंट्री ले लूँ बिकॉज वी आर रिएक्टिंग ऑफ ए सप्लाई ओनली टिल दिस एरिया. ठीक है, बिकॉज दैट इज माई इंटेंशन. आई वॉन्टेड इट टू like show up something within this. So if it gives me some clear indications that prices are supposed to push down lower, I can plan shorts, but not yet. Let it build a clean order flow and then we will see. Okay.
Boys, what's up? और बताओ. So you got a good reaction from buyers, and I'm not really sure where it's heading, so I'll just like stay back, not really execute anything, not trade anything. तो आप जो देखोगे आप. Boys, so यहाँ पे कोई शॉर्ट का सीन थोड़ा और ऊपर आता, वो इनएफिशिएंसी में मे भी शॉर्ट का कुछ बनता. अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है. I do have this clean liquidity to target, but let's see. अभी वेट करेंगे. मे बी वी विल जस्ट सी अ टॉप, यहाँ से मे बी लिक्विडेशन या फिर रिट्रेसमेंट टू अ सप्लाई, एंड देन अगेन टारगेटिंग द लिक्विडिटी लेवल्स. लेट्स सी हाउ प्राइसेस रिएक्ट टू दिस डिमांड. रश नहीं करेंगे बिकॉज nothing is very clear, and if you're not confident about it, what's the point? So if I just change the layout, will my candlestick looks better? See, and then if I just change.
Oh, this also looks clean on the stream. Mm, oh yeah. I think the white one looks cleaner as compared to the dull white, off white. True. Apply to all. No dieting. Workout I started yesterday. अभी मैं डाइट करने चालू करने वाला था, वहीं बोल रहे दिवाली है, सोच ले, यहाँ वहां जाना पड़ेगा. Smart enough, huh? Because I just need a reason to not follow the diet, bro. So diet is the problem. खाना यार, खाने से दूर नहीं रह पाते. That is another problem. See, we started getting reaction from here. Let's see how further it builds up. और जैसे मैंने बोला कि ये रिएक्ट, लाइक ये डिमांड से कैसे रिएक्ट कर रहा है वो देखते हैं. मेरा आइडियल इंटेंशन था यहाँ से लॉन्ग लेने का, बट यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाए तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं बनता लॉन्ग या शॉर्ट लेने का. अभी फिलहाल वी आर sort of reacting from, not really reacting, but maybe we will just start reacting eventually from this inefficiency after this black line gets taken out, and then we will see if we have to enter shorts or no, because it's a low, extremely low probability entry, not the best or the greatest one. So let's just wait and see. बाइंग भाई, बाइंग जोरदार हो रही है. नो न्यू buying. Let's fucking go. It's buying. No intentions to enter in any
trade. Abhi, nothing for me. This area looks good, which is equivalent of this. So यूरो में यहाँ पे अपन करेंगे शॉर्टिंग. Much is happening. होल्ड गया, पंप किया ऊपर. फक, क्रेजी. बट वही बात है, यू नेवर नो, यू कांट प्रेडिक्ट कि कितना ऊपर जाएगा. बिकॉज 40, द सेफेस्ट स्टॉप लॉस वाज दिस 40 pips, and what I said, like it will move for another 40-50 pips or 60 pips. It's bad, it's terrible risk reward. It's not terrible, but it's bad. Because it's very uncertain कि भाई कितना ऊपर जाएगा. अभी भले ही यहाँ से 1000 पिप चले जाए, बट ये तुम्हें पता है क्या? डू यू नो द सर्टनिटी ऑफ इट कि भाई ये तो जाना ही है. बट अगर तुम यहाँ पे एंट्री ले दे तो तुम्हें पता है कि यहाँ तक तो ये जाना ही है. दैट वे यू आर क्वाइट सर्टन. बट यहाँ से इट्स वेरी अनसर्टन, लाइक कहाँ कितना कब, यू डोंट नो. पीटीसी नो भाई, पीटीसी नहीं करता. बट ऐसे नहीं है कि नहीं कर सकते, बट करते. कॉन्शियस डिसीजन है भाई, कॉन्शियस चॉइस है नहीं करना. बट लोग करते हैं भाई, वो भी सही है. 3 मिनट्स 1 आवर. अभी तो ये रेंज में, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँ. इथीरियम. Ethereum looks good for longs. If it just sweep down, come within this, ऐसे longs का setup बन सकता है. Can we keep a little Chotu Mintu, Chintu Mintu? What can? I mean, yeah, you can just like break even your position and allow it to run. If you have entered in this book major here and allow it to run, that way you can, but it's anyways like kind of sort of riskier setup only. 80-85 pips solid.
Hmm. So what else? इसमें क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, बस बात है. We literally have set up nowhere. तो अभी बस वेट करते हैं. एक एंट्री चुल वाली बन सकती है, ठीक है. मतलब दैट इज प्योर चुल वाली एंट्री, दैट इज यूरो का लॉन्ग्स. I know for a reason that price is gonna reach here. This is like pure chul wali entry, just like following the order flow as assuming that it's holding, and just by following the order flow, if we just get a dip down lower, maybe something within this area, like थोड़ा सा ज़्यादा discounted area, we can potentially look for longs. Or like let's just play this as a not a real execution but just a demo entry. Like I'm just checking how much risk reward we can possibly get. It's like close to 1:2. But I would really like to see prices coming within this. That will make it a 1:4, 1:5 risk reward. This would be, I have not executed it, but this would be a sort of fun entry that I have not really called out to you, but yeah, could have been a decent one. Because this is logical. 1:2.3 is what you can get in this one.
Oh, this is the range low. We have not entered in this, but yeah, this is a sort of entry that we have anticipated. Uh, just based on the immediate order flow that's holding, and we are expecting this order flow intentions to be fulfilled and price to reach the next unmitigated level of supply. Uh, it's a good one. It can potentially reach that area, that's for sure. So it's kind of logical. And if you have your own risk appetite as it builds up, because you know, as per the data that we have, we can see that most probably it can just give a dump and then pump again. But it's not the best entry. So I have not really executed any position in this one. But it is quite possible that it can work out pretty well. Yeah. So let's just see how it goes. Leasing alert to all the important levels. Let's see. And if you have any questions, you can let me know in the chat. And but I won't be able to just unnecessary talking. You just wait with me, see what we are doing. Also, boys, those who have joined late, just go to my channel on this specific channel. In shorts, I have just updated a short, I believe yesterday or today. Just go ahead, check that out, and yeah. As I said, it was quite possible, but as I said, I have not entered again in this because very low probability entry when things are not very clear, then that's when you are executing. No point in entering. US 100 we can short, US 30. Oh no, why you would short? Look at this, it's quite bullish. No, don't short. मे बी ये लिक्विडिटी बना रहा है बट मे बी ये स्वीप करके बस ऊपर चला जाए ये सप्लाई तो होल्ड नहीं कर रहा देन वी हैव वेरी क्लियर लिक्विडिटी हियर 4H नो ब्रो डोंट शॉर्ट डोंट शॉर्ट
लेट यू नो इफ वी हैव टू एंटर और नो, बट अभी फिलहाल के लिए तो नहीं. आई एम जस्ट रिमूविंग दिस बिकॉज वी हैव नॉट एंटर्ड. I was just scrolling Netflix and got to know कि इसमें GTA San Andreas है. So I just downloading that. बचपन की याद है. रोटेशन. मेरे को लग रहा है अपन को जो मिलेगा न्यूयॉर्क में ही मिलेगा. वाह, क्या बात है. क्या. आई एक्चुअली वॉच. और मैं अभी फिलहाल क्या कर रहा हूँ पता है, मैंने जो जो चीजें देखी हुई है ना मैं वापस देख रहा हूँ. तो दैट्स. आई नो आई शुड हैव क्रिएटेड कंटेंट इंस्टेड, बट हाँ मतलब मजा आता है, बिंज वॉच कर रहा हूँ मैं भी. But I'm not doing anything. It's Netflix or either something else. But yeah, I need to focus on building social media. ये थोड़ा बहुत तो नीचे जाएगा समथिंग विद इन दिस डिमांड. और फिर ये डिमांड से अपन देखते हैं कि क्या सीन बनता है. गोल्ड इज जस्ट फकिंग पंपिंग अप हार. वो अपन वैसे एंट्री अगर लेते सही तो होता, बट द रिस्क एंड द रिवॉर्ड वाज, वी लाइक इट वाज समथिंग दैट वी वर नॉट वेरी श्योर ऑफ कि अपन को कितना रिवॉर्ड मिलेगा ये ट्रेड में. इमेजिन यहाँ पे एंट्री लेके कीपिंग 40 पे स्टॉप लॉस. अभी ये जा रहा है ऊपर, बट इट्स डेफिनेटली अनसर्टेन ना, और कितना ऊपर जाएगा तुम्हें पता है. अभी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे फिब लगा के भाई मेरे को पता है ये, और कहाँ तक जाएगा. मोस्टली 1.616 तक जाएगा. बस अपन यूजुअली वही एक्सपेक्ट करते हैं. चलो यहाँ पे लगा के देखते हैं. प्लेस फर्स्ट पॉइंट हियर, नेक्स्ट पॉइंट वी प्लेस हियर. सी, इट्स लाइक काइंड ऑफ फ्लॉड ओनली. अब चले ना चले. बस हाँ ये है, मैं तुम्हें मिनिमम टारगेट मिल जाएगा ऑल टाइम हाई के बाद भी. नेटफ्लिक्स.
See, the area that we have discussed, price have reached within that. Excuse me. से बोल रहा है इन्वेस्टिगेशन चल रहा Alright guys, यहाँ से अगर फाइन आती है तो सोच सकते हैं, बट आई एम मोस्टली not really interested trading London for now. I will definitely keep an eye, but alright folks, I'm just calling it a day right now, because as I don't have any intentions, I would instead just go and have my lunch, and I'll be seeing you all in the evening, New York session. Okay, bye, take care, and have a great day ahead. I like or comment बिल्कुल. See you, bye bye, take care. We are getting some reaction from EU demand. Let's see how it holds. और ऑर्डर फ्लो बनता है तो इफ यू वांट टू एंटर यू कैन. आई एम बेसिकली अवॉइडिंग फॉर नाउ. लेट्स सी, न्यूयॉर्क में आके ट्रेड करूंगा. बाय, सी यू.